Superfast 50, I'm Shivangi Shukla. Let's begin. Amidst their clarion call and ultimatum for relocation and repeated pleas to ensure their safety, the Kashmiri Pandits in the valley have started leaving for areas they deem safer in the wake of the recent spate of targeted killings. वही आप कश्मीर अब जा रहे हैं तो डर नहीं लग रहा? हमें कोई डर नहीं। सेना फौजी भाई, आप फौज पे पूरा भरोसा है आपको? लगता है आतंकवाद को खत्म कर देगी फौज? The ultimatum for migration comes after 3 targeted killings in just the last 72 hours and many more in preceding weeks in the Kashmir Valley. A migrant labourer from Bihar was shot dead by terrorists on Thursday evening in the Budgam, whereas earlier in the same day, Vijay Kumar, a bank employee from Rajasthan, was killed by terrorists in Kulgaon. Rajani Bala, a Kashmiri Hindu and teacher from Samba district, was killed by terrorists on Tuesday. जो हमारे बच्चे हैं वो वहाँ काम करने के लिए गए हैं, न कि उनके कोई काम में मुदाखलत करने के लिए। वो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं। वो हर वक्त कश्मीरी पंडित हर वक्त तैयार है कश्मीर जाने के लिए तैयार, और वो भी बेचारे गए अपने काम कर, मगर उनको टारगेट किलिंग हो रहा है उनके साथ। तो बेचारे दहशत में हैं कि हमें कोई ना आगे आके कोई बम ब्लास्ट करे, कोई ग्रेनेडर फेंके। वो तो टेंशन में ही बेचारे हैं। Heartbreaking visuals continue to come in from the valley amid the spate of targeted killings of Kashmiri Hindus who have started leaving the valley to safer locations. While Republic continues to report from ground, Kashmiri Pandits say that they do not want to leave the valley, but the continuous targeting of Hindus by the terrorists has pushed them to move out of their own homeland. हम इधर अपने कमरे में बैठे थे, 2 आदमी इधर से आए, फायरिंग किया। हम दूसरी जुग्गी में बैठे थे, 2-4 लोग इधर बैठे थे हमारे। इन चारों लोगों पे अटैक किया उन्होंने, 2 फायर निकाला तो बाद में पीछे को भाग गए हमारे। एक की डेथ होगी तो एक वो हाथ में मरा था लगा चोट। वो अंदर आए क्वार्टर में ही आए थे वो लोग? क्वार्टर में आए थे सर। आप लोगों ने देखा है? मैंने तो काला कपड़ा पहना था, मेरे को देखा था थोड़ा सा मैंने, तो हमने सोचा भी हमारा आदमी इधर आएगा, वो तो कोई आता नहीं है, तो हमने सोचा, देखा नहीं भी पूरा कौन था, मुंह बांधा था, काला कपड़ा पहना था उसने। हम सामने जुग्गी में थे बैठे। Panic-stricken Kashmiri Pandits have now started moving out of Kashmir en masse. Security has been stepped up around the transit camps in Kashmir where several thousand Kashmiri Pandits' families reside. कितना मुश्किल है ये, इतनी ज़्यादा चुनौती है? बहुत मुश्किल से हम वहाँ से निकले। हम सोच रहे थे कि मतलब हम कैसे वहाँ से भागे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी जान बचा के हम वहाँ से भागे हैं। बच्चे के साथ कितना मुश्किल? बच्चे के साथ बहुत मुश्किल, वहाँ पे अवेलेबल नहीं, चीज़ें अवेलेबल नहीं, बाहर निकलना नहीं। हम इवन कि हम भूखे वहाँ से निकले, कुछ बाहर निकलना नहीं, मतलब हम गेट के बाहर भी निकलने से अब डर रहे थे। Union Home Minister Amit Shah is holding a critical security review meeting on the Jammu and Kashmir situation. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha and senior officials of various departments are present at the meeting. Before the full meeting, which will also involve the NSA, Army Chief and Security Agency, DGs, the Home Ministry and the Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha held a one-on-one. Fear has gripped migrant workers in the Kashmir Valley in yet another incident of targeted killings. Terrorists opened fire on non-local labourers in Jammu and Kashmir's Budgam, in which one of the victims, Dilkush from Bihar, succumbed to his injuries. However, a number of migrant labourers have also reposed their faith in the army and say they will continue to work. बच्चे भी साथ में हैं, परिवार को लेके जा रहे हैं, तो डर नहीं लगता है कि अपने साथियों के बच्चे? आर्मी है ना फौज, ये पूरी सुरक्षित रहती है। पुलिस कश्मीरी लोग खड़ में नहीं आते हैं घूमने के लिए, वो रहते हैं अपने गांव की तरफ। तो भाई है ना फौज में है। आपके भाई फौज में है? In Jammu, Hindu employees have staged a massive protest over the increased targeted killings of civilians in the Union Territory. The protest comes after the targeted killings of a female teacher, Rajani, at a school in the Gopalpura area of Kulgaon, and following that, a bank employee
at an SBI affiliate bank was also killed in Kulgam by a terrorist. Reacting to the targeted killings, former Jammu and Kashmir Deputy CM and BJP leader Kavindra Gupta said that immediate steps need to be taken. He further said that that combing operation is needed now. की सरकारों ने, चाहे वो राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार हो या इनके से मिलते जुलते ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें रही हो, इन्हीं के दौरान ये सिलसिला शुरू हुआ था। और आज ये लोग वो हैं जो कि पाकिस्तान की वकालत करते हैं। आज इनको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। ये तो सुरक्षा बलों पर सर्जिकल स्ट्राइक पर ये सवाल करने वाले लोग हैं, बाकी नॉन सीरियस लोग हैं। सरकार को पता है क्या करना है, किस प्रकार से हालात का सामना करना है। Congress leader from Jammu, Ravindra Gupta, meanwhile, has blamed the BJP-led central government and said that it has failed to deliver in the valley. He went on to say that their review meetings are all in vain. 4000 के करीब कश्मीरी पंडित मुलाजिम माइग्रेंट वहाँ पे हैं जो पिछले 10-15 साल में वहाँ बसे थे। आज उनको भी वहाँ से भागना पड़ रहा है। सरकार नाकाम है, विफल है, उनका सुरक्षा देने में नाकाम है और सुरक्षित वातावरण तैयार करने में नाकाम है। दावे ज़रूर करती है कि नॉर्मलसी है और ये पोल खोल गए, क्योंकि पाकिस्तान या आतंकवाद को कोसने से ही काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को के खिलाफ लड़ाई में, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में हम सब एकजुट हैं, लेकिन सरकार के दावे और सरकार की बातें खोखली साबित हो रही हैं। External Affairs Minister S. Jaishankar is on a 5-day visit to Slovakia and the Czech Republic to impart further momentum in the ties with the two Central European countries. During a question and answer event at Bratislava, he stood firm on India's position on Ukraine war and also asserted how Europe had also been silent on many global issues. Who is silent on what issue at what point of time? I could point to a whole lot of issues on which, as I said, Europe has held its peace. PM Modi visited the mega exhibition organized at Indira Gandhi Pratishatan in Lucknow during the groundbreaking ceremony of the 3rd UP Investor Summit. He was accompanied by Defence Minister Rajnath Singh and UP CM Yogi Adityanath. PM laid foundation stones for 1,406 projects worth more than rupees 80,000 crore at the groundbreaking ceremony of 3rd of the UP Investor Summit in Lucknow. यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। Hailing India's growth story at the UP Investor Summit, PM Modi said that the world has taken notice of India's potential, which is why the country is now number 2 in the global retail index. भारत के पोटेंशियल को भी देख रही हैं और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। PM Modi also called on investors to make the most of the golden opportunities to invest in agriculture in UP. मैं समझता हूं कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए
और यहाँ जो उद्योग जगत के लोग हैं उनसे मैं आग्रहपूर्वक इस विषय पर कहना चाहता हूं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए इस समय एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। Reiterating the mantra of reform, perform and transform, PM Modi said that his government's emphasis is on policy, stability, coordination, ease of doing business as well. केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। Highlighting success of India's startups, PM Modi said that the number of startups registered in India is also reaching around 70,000. 2014 से पहले हमारे यहाँ कुछ 100 स्टार्टअप भी थे, लेकिन आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या भी 70,000 के आसपास पहुंच रही है। अभी हाल ही में भारत ने 100 यूनिकॉर्न का रिकॉर्ड भी बनाया है। Batting for his reform agenda, PM Modi said that be it one nation, one tax, or GST, or one nation, one grid, one nation, one mobility card, or one nation, one ration card, these efforts are a reflection of the centre's concrete and clear policies. One nation, one tax, GST हो, one nation, one grid हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। President Ramnath Kovind and PM Modi visited the Patri Mata temple at the Paronk village in Kanpur. Now, Paronk is the ancestral village of the president. The duo will also attend a public function at the president's ancestral village. The Enforcement Directorate has issued fresh summons to Congress leader Rahul Gandhi in connection with the National Herald case. Rahul Gandhi, who is apparently out of the country, had skipped the summons on June 2nd. The Hyderabad police is currently investigating an AIMIM leader's son in connection with the alleged rape case. A luxury car where the crime is said to have occurred has been seized. Amid angry protests by locals in the MOOSA village, Punjab CM Bhagwant Mann reached Sidhu Moosewala's residence and met with the late singer's parents. Punjab CM Mann's visit to meet Sidhu Moosewala's family comes amid speculation that he had postponed the plan due to anger at the village. Heavy security was deployed at the MOOSA village ahead of the CM's visit. The public outrage against Aam Aadmi Party government came after it withdrew the late singer's security and minimized it. High drama erupted at Sidhu Moosewala's residence ahead of Punjab CM Bhagwant Mann's visit. MOOSA villagers crowded outside Moosewala's residence to oppose the Aam Aadmi Party leader's entry into the late singer's home. While police officials continue to attempt to pacify angry MOOSA villagers, the Aam Aadmi Party spokesperson Malvinder Kang has said that an ex-MLA of Congress and his supporters were creating drama outside the Moosewala home. He claimed that the opposition party